Okay, so hello guys, we are live now, and today I'm going to continue with a project which I was doing already, but it will be a newer and better version of a compiler. I'm going to make a C++ compiler today, and I will try my best. So today's topic will be scanning inside compilers, which means I'm going to scan tokens. And here are my notes that I made. Uh, I'm following a book which is called Crafting Interpreters. So that is the book that I'm following, and I will just continue with the project of my compiler. So let's go. So the first thing that I'm going to do is to make a main file of my C++. A main file. Let me increase the size of the font. Yeah, good. A main file, main cpp. And then I'm going to do some basic thing. Include into your IO stream and into main, because I'm also going to pass arguments, so I'm also going to mention that thing. The first thing that I need is int argc, then int it will be int, it will be char pointer argv, if I'm not wrong. Argv, and I'm just going to check the out, which will be our normal hello world. Hello world. I also need to return something. Return 0. It will be RGB, but array. So this is the basic code. So this is the most basic thing. Okay, what I'm going to do is I'm going to make a Z file so that I can run my code. I'm also going to make a new file which will be test.cpp. It will be simple code, return 0. Is this going to work? I think not, but let's just see. We have main, and then I'm just going to give it some another extension, like any random extension, which will be ccc, or I can just call it cc. Still C++. Oh, okay, so this will be the extension that I'm going to use for now. I'm just going to make it as a text file, not a cpp file, to keep it simple. And the next thing that I need is a z file, which will be
run.ch, and I'm just going to simply bin boot. What was the bin? Was it bin? It was bin boot. Wrong. Bin boot. Stupid. Boot, and then the command that I'm going to use. First of all, I need a path, absolute path, abs path, abs absolute path, which will be the flash home not, and I have documents, then I have GitHub, then I have a cpp compiler. This will be my absolute path. I'm going to use this path. I'm not sure about the syntax, if I'm correct or not. Let's just see. The command that I'm going to run is plus plus, which will be the main file. How I'm going to run the siege command. Tried it earlier. We need to cd. Okay, this space is unnecessary, and the main.cpp. Then I'm going to output a main file. Yes, main file will be good. It will be good. And the next thing is to run the main file. Main.cpp. No, it will be main. Only main file. But I'm also going to pass an argument which will be the file name. It will be test.ox. Test is a keyword, I guess. Test C. So I'm going to keep it a test C. It will be the test C. And in this ish, I need to do cd, then to the abs path. Abs path. With the $sign. I hope this siege is going to work. It will be chmod plus x and the file name, which will be run.siege. Yep. So I have this siege file. Let's try running it. It will be siege. A bad interpreter of bin boot, no such file or directory. What I did wrong? Bin bash. It's not good. It's bin bash. Run it again, and it's hello world. Okay, so I have this file which is going to run my main. That's good. That is good. I have a main file. So the first thing that I need is a token and the token type for my scanning phase. Yep, that's what I need.
Mm. Is the recent? Okay, so let's continue. I'm going to make a token enum, class token, which will I'm just going to give it enum token type. Yes, it will be a token type. So we have a lot of type of tokens, and I need to name them all. Just one little thing that I need to do. What I'm going to do is add a boolean. Let's do it. Start a pool. Which is your most favorite language? Is it C++? It is Java? It is Python? Rust? Or I will add JavaScript. Okay, let's go. So I was doing this thing. I was adding some token types. So the first one, this will be of type left para, left para, and right para, right para. Then we have right para, right para, right para. Then we have what left brace, right brace, left, what do we call this bracket? Left square. Jesus.
SQUAOE bracket, and again right square bracket, SQUAOE bracket. So I have these. Check it out. Okay, so I have these parentheses, bracket, braces, whatever they are called. And the next thing that I need is some different kind, like a dot, a dot, a comma, and what do we have? We have hyphen, we have dash, a dash, and what are the different types that I can add? I can add them later. So I'm going to add a integer, character, a string, into literal, mm, character, string, into literal, and what I can have? I can have boolean. Then I have what? Literals. Literals. Is that a right thing? I'm not so sure. These type of tokens. Then I have semicolon. Also, I need to add operators, which will be plus, minus, multiply, then divide, plus, minus, multiply, divide, and what more type? A modulus. A modulus operator. Is there any other thing that I'm not covering, that I have not covered? Divide, divide, divide.
comma dot minus plus semicolon slash. It will be slash, not divide, slash. And also one more operator which will be multiply. I will just call it star because it is not multiply, it's star. These are the operators, and we need that exclamation. So I'm just going to add that exclamation type, which will be bang, bang, then also bang equals, which means not equals, equals, then I'm going to add greater than or greater equal, greater equal. After this I have less, less equal, equal, QAL. After this I'm also going to add equal, and with equal I'm going to add a equal, equal, then again a equal type, equal. Mhm. Hello, hello Drivyansh, hello. Okay, I have equal. So I have all type of parentheses, and I have dot, comma, hyphen. Also I need some kind of keywords, which will be and keyword, and no, and is not a keyword. If plus, we have if, we have else, we have and typing code in big 26. Yes, I know, it's a crime to write code by your own hand. If else, I also need to have those true false value, true false for my boolean operator, not operator, boolean keyword. Then I need a variable type. I need int a char, and I need a, do I need a string? No, I don't need a string. What I need is character, int char bool. I guess this much is enough. There are already a lot of token types. I'm going to go with token now. Token. Token. Oops. This file is getting big already. So I have a token. First of all, I'm going to add a which will be token type and token type. Then I'm also going to add value of this token. To get at level you are right now. What project did you do to get at the level you are right now?
To be honest, I haven't done anything great. Like I have not done any big projects, so compiler is really not a magic. It's not that complicated stuff. I'm just trying to make a basic compiler, for learning purpose, just for a better understanding of code. That's what I'm trying to do. Int, let's just, I'm only going to take int value for now. I can do it later. Only a int value. How can I take multiple value? First of all, I need a token type, and there are two more things that I need. A line number. Yes, a line number will be line number. Int line. I have a value, graduated or pursuing. I am already graduated in 2025 BTech CS. String lets me string. Can I use a string? String value, string lets me. Okay, I will try to keep value in strings. That will be easy. I can also hold int values and I can convert them later. That's okay. The string is better for me. I have line number, I have token type. What more do I need? I don't think I need any more other than this. So let's just go to the main function now. What I need is I will input a file and I'm going to check the arguments. If the argc is not equals to 2, then I'm going to throw cout will be अभिजीत। भाई कैसे हो? ऑल गुड यार, आप बताओ कैसे हो? wrong wrong or I'm just going to write wrong arguments and just as much as enough, only for me now. And I'm going to return it was error exit failed. Yeah, so if I have a argc, then what I'm going to do is I'm going to take the file name. So what I need is a hashtag include an f string from a file. Just going to read the file. So this if not if 7 out of 1000, वेरी गुड यार। AWS क्लियर हो गया। तो कौन से वाला था, मतलब जो सबसे पहले वाला होता है सर्टिफिकेशन, वो द फर्स्ट वन? कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस सर्टिफिकेशन मिलने के लिए। मतलब अभी तो मिलेगा वैसे। f stream std f stream file, which will be my argument, RGB of 1. Yes, CLD2 एंड एसोसिएट बोथ क्लियर हो गया। अरे बहुत सही यार, बहुत सही। So how did you prepare for your AWS certification? From like what
Did you try some online resources, purchasing some course, or just YouTube? Stream file. My bad. My bad. My bad. Stream file. Stream file. I'm going to read the file. Yeah. Let's just check if the code is working till now. I'm going to save the file. I'll try running it. Runs ish. Yeah, code is working. No issue. So what I need is, if not a file, then I'm going to throw a error. Not error, but I'm just going to tell him that I don't get any file. Wrong file. Wrong file. And then backslash n. I'm going to return again. Return exit failure. Is this going to be exit failure? Yes, I'm just going to return exit failure. So I'm going to return this. I also need a variable which can hold the whole file content in a string. For that, what we have is string. Yes. I got YouTube videos and created my own React web app where I put my sample questions file. Practice platform. Oh, that's great. That's great. So the next thing that I need is exit video. After this, what I need was string str file str file string, and is there something that I need to, yeah, I need to add the file, the header file. Include. Oops, my bad. Include s stream. Yeah, correct file. So the next thing that I need is file str left shift operator. After this, what was the function? It was file dot str buffer bfr. Nope. It was read buffer, rd buffer. Yes, it was rd buffer. So I can try printing this file now. cd cout, which will be file str. Let's just try printing this. If there's some kind of issue, do I need to do something? String. I cannot directly print out this file. File.read buffer. I cannot directly read this file. Truly grinding for 1 week, but worth the trouble. Yeah, definitely worth it. Yeah, if you are getting a certification in AWS. AWS is already in high demand, so it's beneficial. It's my 10 port. What should I start with? You want to start in CS? You want to start some kind of language or something? Do you have an algorithm or flowchart, or you're rebuilding it? Now I'm following a book which is called it was Crafting Interpreters. I'm following that book, and according to that, I'm trying to make this one.
So it is only the first part of my compiler, which is the lexing part, the token, which in which I'm going to make tokens, and then in the next stream I will try to make some parsing like AST or anything, but I need to read that first. Your file string. Why I cannot print this? What do I need to do? Do I need to convert it to string? Is this going to work? I don't think so. Oops, 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 oops. Is this going to work? Okay, it worked. Yeah, I only need to convert it to string. It worked. You work with Fang or Mang? No, I don't. I have never worked with any Fang or Mang. Start with C and basic component. It's better to understand basics. Don't jump to Python. Yeah, I will recommend learning like starting your journey with C or C++. It can be a little bit hard, not little bit, it will be definitely hard, but it's definitely worth the time you will give it. Directly starting with Python I don't recommend. Yeah, starting with Python is most dumbest thing I have ever seen. File str. Okay, so I have all the file content. Now what I need to do is to make a variable. Variable. Where do I make it? I just need to pass the strings to the class. Okay, so I'm going to make a scanner class. Scanner class. Is that okay? Yeah, I'm going to make it. So I'm going to make a header file first, which will be if you are really starting with C or C++, that's best. Please do not start with Python. If you are a student, go with C, C++. You have plenty of time to learn many other languages. You can learn Python later, but not in your initial days. Balaguru Swami is the best for basic on C and C++. Okay. So. Okay, I was trying to make a header file which will be of scanner class. Scanner.h. Let's keep the name small. Scanner.h and a scanner.cpp file. I'm going to keep it inside the scanner folder. Where is my scanner? Move. What is the move command? Plus. What is the command for moving a file inside NeoVim? That is shit. Scanner.cpp scanner.h. I'm just going to delete this file. Yep, delete this one also, delete this. That's going to keep these two. So I'm going to define my class, which will be class scanner
scanner and public, and then private, 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 private. So inside private, I'm going to add my source string, which will be of type string source string. Yeah, I will keep it source string, and then I also need a yeah, I get it. Yeah, so I thought I would get in touch with Python. I don't know why people are overhyped it. Python is not overhyped. The currently anything you do in your AI stuff, whenever you do some kind of AI stuff, you always do it in Python, which is the best language for AI. It is I guess it is the only language currently which is being used for AI most of the time. But if you're starting your CS journey, you need to learn fundamentals first, which only C and C++ I guess I can teach you. Even Java is good, but I will still recommend C or C++. That pointer concept is really good. It's going to make you cry, but still. Okay, so I have a source string. What I need is a vector for tokens, tokens of type token. Oops. Wrong syntax. It will be of type token. Yeah, if I'm not wrong, it will be of type token. Okay, I'm going to make one more header file. One more. It will be of type of type token dot h. Yeah. What I'm going to do is I'm going to move this code inside that file. This token enum. Come on, get select. Token h. Pragma once. I've never used this, but pragma once. I hope this syntax is not wrong. How to use pragma once? How to use pragma once? C++ pragma once. Our declaration class goes here. Okay, so that is correct. I have correct implementation of these. And the next thing that we need is do we need to do JEE or CET? JEE or CET is not compulsory, but if you want a good college, you definitely need to do it. Generally, I think it would be better to see if you're really good at it. Yeah, if you're really good at studies, just go for JEE. Don't waste your time. Just prepare for it if you're really good. Test to its file.
Where will be my token? I don't think I need any token inside this. Yeah, but I have some kind of syntax error, which is std string. Okay, so I need to include a string also. Include string. Is there any other thing? No. All error gone. Things are done. Now this is the scanner class. I need to include. First of all, I'm going to say pragma once. Pragma once. And the next thing is what can be the next great thing? I need a vector and string also. Yep. Include vector, include string, and in the public function I'm going to make those what were those functions? It was advanced peak and peak ahead. Peek ahead. Yes, it was peek ahead. Well, personally in my life, I've never given JEE or CET. Never. Never tried. Studying for G, but don't take it into. Yes, preparing for G leaves an impact on you. It makes you smarter. You're right. I agree with that. I don't give CET. I don't give CET. So the public function that I need is a string. String. It was advanced. The first thing that I need is a scanner. What do we call this thing? Constructor. Yeah. I'm going to pass a steady string. It will be source string. And what I'm going to do is I'm going to move src. What is the syntax? Can I use this? I'm just going to go with simple syntax. It will be a copy, and then yeah, I should not use any reference but a copy. src str equals to src. Say oops. It will be token. I also need to include the token file. Include my token file, which will be a scanner, then this token.h. Look at this. Have it. Can I do this? Yes, I can. Without any issue. No. There is some kind of issue. Can we define?
I don't know, my back hurts whenever I open VS Code. Why is that? Why does your back hurts? So I have a scanner. I need a white. Will it be a white? It's not going to be a white. It's going to be a string, a character. I will keep it optional. Optional. OPTIONs. Use options or optional. So the optional, the type will be a char type. And for this, I need to advance. I used to make cheats for CS2 and sell them to random Russian. Seriously? I used to play CSGO, it's been like 5 years. Same, even I regularly play CSGO. I mean CS2. It's CS2 now. Advance. Yes, advance. So what do we need in advance? We don't need anything. I am old. What is your age? You have to change CS2. Yeah, movements are like more natural. That jiggle physics, that's becoming more and more real. But that update with the magazine that fucked the whole game. We'll continue. I'll see you later. Okay, buddy. Okay. You are 21. I am 24. Still younger. You are still younger. Don't lose hope. You still have time. So the next thing that I need is standard optional of type char type, but it will be a peak, which will be a similar version of advanced but not moving the index. Okay, so also while moving the index, I need variables to keep track of line. Yes, I need it. I need variables to keep track of line. Bro, I'm 15. Damn. What do we have? We have advanced, we have peak after. Yeah, there's one more function that I need is optional of type yeah, but peak after. Peak after. I will name it peak next. That sounds much better. Peak next. Do I need any other thing?
It will be a peak next. Password evolution. Sukabaliat. Is there any other function that I need? I have all the required function. Okay, one more function that I need is a void type. Void type will it be? Yeah, a void type which is going to tokenize, 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 tokenize. I will just give the name tokenize, and it will take a source string. Do I need a source string? No, I don't, because it's already inside the class. So what do I need? Do I need those variables? Where is that? Where is that? It will be token h type token. You missed y tab. What does that mean? Y tab? I don't get it. Y tab. Y tab. Y tab. Oops. Oops. Tokenize. We need to pass anything. Let's just implement these first. Use of undeclared identifier srcstr. Undeclared identifier. Private. It's private. It's private. Okay, I guess I. Okay. This is the error. Missing return type for function scanner. Do you mean constructor scanner? Yes, I. Okay, I added an extra and that was the mistake. Now it is okay. Now it's okay. It's okay. Okay, bye bye. Thanks. Do you work for any company? Well, currently I'm not working for any company. I did 1 year internship in a startup as a backend engineer. Currently I'm looking for some new job. I'm not employed right now. Yeah, it is okay now. Just give me a moment.
So all good. Let's continue. Where do you study? If you're asking about college or my current degree, anything that I'm doing, currently I'm not studying. I did my BTech already in 2025. It's private. Let's go with this C. Okay. Z file close, main file, scanner.h. I'm just going to copy these functions. So the first thing that I need to add is the header file, which will be include scanner.h. Yes, this is the file. Now I also need to tell that it is of scanner class. Scope resolution, scanner class, scope resolution, same thing here. Scanner class, and the implementation that I need is here. I'm going to implement these functions. So this is the last function, scanner of tokenize. Okay, bro, bye. Okay, so the first function is advanced. I'm going to keep it down. I will implement this later. The first thing that we have is a peak if 50. I also need a size, which is src str. Oops. We have token. There are multiple functions that I need to implement. Now I'm getting confused. Function that I need to end is at end. Where can I implement that function? It's a C++ compiler for C++. Yeah, like that. There are more functions that I need to implement. After knowing a bit of C language, I'm gonna do some C++. Yeah, you can definitely do C++ after C. No, what stupidity was I trying to do? Scan tokens. Gonna start current line. Do I need these functions? Private, this variable private, which will be int line, and in
start, and also need a int current type. Current, yes. Is it going to be private? Yes. आयुष और भाई कैसे हो भाई, कैसे हो आयुष? वेलकम टू द स्ट्रीम यार. ये क्या फाड़ सीरीज है ब्लैक मिरर? बोला था ना यार, बोला था ना ब्लैक मिरर. और जो है ना, कौन सी बताई थी मैंने दूसरी? ब्लैक मिरर के साथ एक और बोली थी यार, लव डेथ रोबोट्स. वो भी सेम लेवल की है. दे बोथ आर सेम लेवल यार. The best thing about Black Mirror is that all episodes are different. All episodes. पुराना. Okay, Ayush, you change your name. Okay, okay, well, got it, buddy. I have line start and current. Okay, one more function, which will be of type boolean. It will be of type bool is at end. This will be my function, and I'm going to implement this inside this class. अभी फीफा मोबाइल खेल रहा था. फीफा मोबाइल, अरे यार मैंने कभी ट्राई नहीं किया फीफा मोबाइल. मोबाइल में मैं एक ही गेम खेलता हूँ, ब्रॉल स्टार्स. मेरा फेवरेट है अगर मोबाइल में देखा जाए. This function, now the thing that I check is return if the src, if the current is greater than or equal to src. What was that? src string strategy compiler बनाने की. So the strategy that I'm um the thing is that I am following a book which is called Crafting Compilers. I heard it is one of the best books, so I'm trying to go according to that book, how it implements things and how it does things. So I'm trying to follow that book. And today I'm just going to do the first part of the compiler, which is scanning, which is the most basic and first initial part, just to generate some tokens from a simple text of simple string which I can get from a file. For now I am just reading this line, return 0. I'm not going to return 0, I'm going to return like 23. I'm going to, yeah, this is the line that I need to scan and create its token. That's what I'm trying to achieve today. PUBG में pro बनना थोड़ा difficult है, but how they earn money. I know one of my friend is in PUBG sports. Yeah. He goes to the events and he gets sponsorship and some money from all this stuff. That's how he gets money most of the time. From people gambling, spinning shit. क्या लिखा है? GSIH 2026 में पार्ट ले रहे हो यार? मैंने देखा नहीं अभी ये कब हो रहा है ये इवेंट. अगर ले सकता हूँ मैं पार्ट.
अगर इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना कि तुम्हें मतलब कॉलेज में होना है ऐसा कुछ, तो मैं ले लूँगा हाँ इसमें पार्ट. Then I would need a team. Are you an IXOS user? No, I am not a NixOS user. No, no, I am not a NixOS user, but I am a Linux user. I think you, I think you mean because of my name, Leo Nix. Not that has nothing to do with NixOS. अभी फुटबॉल होता है स्टेट लेवल. हाँ, LPU supports all of the sports. You know, LPU, I would say if anyone want to play sports, then LPU is one of the best college. One of the best, not the best, but one of the best for sports people. Students, they get a lot of opportunity to play in many, in many games, and LPU really supports, really supports their students who play sports and get them medals. And for gold medalist that who earns a medal for college, they have free hostel, they have free study, everything is free for them. ये ब्लैक मिरर का एपिसोड भी इसी पे होगा. किस पे have you watched that episode of Black Mirror? Yes, free bro, free. You need to earn college, sorry sorry, you don't need to earn college, you need to earn medal for college, and college is going to provide you free living. Yeah, that's what the LPU do. And many students just go in LPU for that reason. A lot of most of the people, most I would not say most, but yeah, many of the students which are in sports, they're generally not from richer background, not from very financially strong background, and it's one of the best thing that Lovely can do for them. ये सब सीरीज देख के मेरा ब्रेनस्टॉर्म. क्या बनाने का क्या? What are you trying to make? If the current is greater than SRC, SDR, the length range here. For example, if my current length is undeclared identifier, SRC string, so you cannot use it like this. There is some level of stupidity that I'm doing. Is it because of this scanner? Colon. Okay, it's going to work now. Is it going to work? Nope. What is the issue? I guess because of these functions. So we don't have access to current. We don't have access to current. Int current, current. It's definitely some kind of spelling mistake. Is it an current? So what is the issue? Return current should not be the case. This is the camera. So क्या क्या मैसेज डाला है? It's 9 lakh if I'm not wrong. 1 2 3 4 4 zeros. That is 9 lakh.
Are you serious? 9.3 lakh. Hmm. 9 lakh people getting laid. Okay, so this is the news after 9. It's 92,000, it's not 9 lakh. 6 I guess, okay, overall 2 years. Yeah, that may be possible. That may be possible. सुने 1 साल से इंडिया में वही भाई, तुमने जो 9,30,000 को एक ही साथ लात लगवाई है ना अभी अभी। ये बहुत घटिया चीज है। ऐसा क्यों हो रहा है? स्ट्रिंग एस डिफरेंट। एरर क्या था? Different kind of symbol. strng. Do I need to include string? Do I need to include string? Do I? Is it in? It's also not working, and I don't know why. It should work. This bitch should work. Yeah, colon. Is it going to work now? Is that an out of line definition? Is at and does not match any declaration in scanner. Does not match anything in scanner. How is that possible? टोटल 2023 में 11 लाख के पीयर होते हैं। Okay. But best thing is do coding. You know, AI is doing that already for us. If you want to code, that is only for your own understanding, not for company anymore. Is at end. Why this? I guess I forgot to save these things. Is that why? Okay, so I guess these. It is okay now. I just need to remove this scanner. Now, what is the issue? Can you please tell me? String src is still not working. Still not working. Why? The definition of a string has a different kind of symbol. Why? Do I'm confused now. Yeah. Where do we? I have a class called scanner.
in .h file, and in C++ I need to implement its what is that thing? I need to implement mm, constructor. Constructor. How do I do this? I have scanner. What about this file? Scanner.h. Okay, I did it already. It's good up till now. But now when I do this inside scanner int id, then what is wrong? I need a scanner. Yeah. Okay, all error are gone, which is good. But basic model is possible. एक मिनट, तुमने इतनी चैट कर दी, मैंने पढ़ा भी नहीं अभी। क्या करेगा? आप क्यों नहीं एमएल सीखते? यार मशीन लर्निंग ना टोटली डिफरेंट फील्ड हो जाता है, अब उसके अंदर जाके जो मैथ्स और वो सब चाहिए, तो मुझे पता है मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा अभी के लिए। सो मैं डायरेक्टली एमएल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। आई डोंट वांट टू परस्यू इट। अभी एआई का मतलब खाली, अभी ना एआई का मतलब दो चीज़ों में बट चुका है। एक तो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम, जो कि मेन उन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट का होता है जो कि खाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पूरा इन डेप्थ जाते हैं, उन मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, मॉडल्स को रिफाइन करते हैं। वो इंजीनियर्स अलग हो गए, उनकी बात अलग है। एक हो गए जिन्हें एआई की इम्प्लीमेंटेशंस आती हैं, एआई को प्रॉपरली यूज़ करना आता है, वो चीज़ अलग हो गई। तो मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली साइड पे नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। और मुझे पता है, देखो मैं मेरे हिसाब से जो मेरे को आता है, मैं जितना करता हूँ वो उस हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा। अविनाश शुक्ला, हेलो ब्रो, हेलो अविनाश, वेलकम टू द स्ट्रीम। हम यार वो ना अपनी पसंद वाली चीज़ है। देखो, अगर तुम्हें एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है तो उसमें जाओ। उसमें तुम्हारी मैथ, अलजेब्रा, ये सब वो सब बहुत चीज़ें मिलेंगी उसमें, तुम्हें ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग चाहिए। बट जो एआई की इम्प्लीमेंटेशन वाली चीज़ें हैं, जो एज अ डेवलपर तुम्हें चाहिए होती है, खाली चैट जीपीटी चलाने को एआई चलाना नहीं कह रहा हूँ, बहुत चीज़ें होती हैं उसमें भी। अब तुम्हें एमसीपी का पता होना, रैग, ये सब वेक्टर डेटाबेस, इन सब चीज़ों का अच्छे से पता होना चाहिए। और एलएलएम थोड़ा, एलएलएम्स का यूज़ करना, उससे कुछ बढ़िया चीज़ें बनाना, डेवलप करना, उस सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं। एआई इज रिसर्च फील्ड, यस एग्जैक्टली। आई एम बैक, डू यू रिमेंबर मी? अविनाश शुक्ला, आई थिंक इट्स बीन many days. To be honest, I don't really remember. I'll not lie.
एग्जैक्टली भाई। इफ यू वांट टू, अगर कोई चीज पसंद है भाई उसके लिए भी एग्जाम देना पड़ रहा है। हम्म, यहाँ पे तो बस मुझे एक ही चीज करनी थी, और सिंटेक्स मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। मूव था, मूव, अब मूव इन सी प्लस प्लस देख ही लेता हूँ ना। मूव इन सी प्लस प्लस, how do we use it, how do we use it, how do we use it, std move, what, vector 1। हम्म, अच्छा हाँ समझ गया, उस दिन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे ना। हाँ इससे याद आया, याद आया। उस दिन ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके हम बात कर रहे थे, मैंने ubuntu बोला था स्टेबिलिटी की वजह से ना। या आई रिमेम्बर। बट आई थिंक इट्स बिन मेनी डेज सिंस यू जॉइन लास्ट स्ट्रीम, या? How do you use move? You know what? I'm just simply going to do it like this. src string equals to src, and it is done. Just remove this shit. Oh. Yeah, Ubuntu is really great. You know, the best distro I would say for a beginner is Ubuntu. And if you really love to, explore more about Linux, so you can try different flavors on your virtual machine, or you can just, partition a 70-80 GB of partition, take out that part, and you can keep on installing and trying different flavors. But for the stability, it's Ubuntu always, any day. ये कौन सी फाइल खोल दी मैंने, scanner test.c. I'm just going to close it. Scanner.h, token.h. Don't need it, don't need it. Now let's take okay. Arch is great. Shut up, you Arch user. वही है क्या? By the way, I use Arch. लेकिन आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, यस। I installed it on my all three PC. Seriously, you don't want Windows anymore? You should also have Windows side by side, because there are some application or some games that you may need to, run in Windows. Sometimes in Linux, it just get hectic. Let me show you my portfolio. Just look at this. It's a very basic portfolio, very simple and minimal. Just to show who I am and what I have done. My GitHub is dead right now. I made a dual boot of window. That's great, that's great. Dual boot of window and Ubuntu, that's great. I would also recommend you to use Arch Linux. Yeah,
Just give it a try, but don't use it as your daily distro, not your daily OS. Ubuntu is your daily OS. Remember that, do not forget that. But Mac OS is love. Mac OS नहीं, देखो OS के वैसे उसमें देखा जाए ना, देखो एप्पल बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया है, नो डाउट। बट रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिसकी रिक्वायरमेंट एप्पल से बिल्कुल फुलफिल हो रही है वो बंदा खुश है। मेरे जैसा बंदा बिल्कुल खुश नहीं होता है। फ्रीडम चाहिए लिनक्स वाला, पावर चाहिए जीपीयू वाली। श्योर है, प्लीज़ मत ये बोलना कि तुम एप्पल के फ़ोन में या किसी मैक में मेरी लाइव स्ट्रीम देख रहे हो। इट विल हर्ट मी। हाँ, क्या लिखा था मैंने क्वेश्चन। Linux is for games. I played hundreds of games on Linux. Isn't there? Yeah, you're right. I've tried. What was the game? It was Rainbow Six Siege. I've tried Rainbow Six Siege on my Linux in this Ubuntu. This, yeah, this Ubuntu in which I am working. I have Steam installed. I can show you. I do play Taken. Yeah, Taken works fine. It's work really great. Taken is really good on on Linux. But the Rainbow Six Siege was having some kind of issue. When I was going in, lobby to there was that section where you can apply skins of your characters. So I was doing that, and it always crashes. It always crashes. Never worked. That was the issue. आपकी सीट पे कितना ग्राइंड किया? कोड फोर्स, कोड फोर्सेस। I've only tried one question on code forces. If you're talking about code forces, आजकल बहुत cheaters लोग हैं। Yeah, you know, RE9. What is RE9? What is RE9? What is RE9? Sure, what is this? If the current, which will be SRC current, SRC string current is not equal to if is at 10, then I'm going to return. What can I return? Options, I forgot. Optional char. What can I return if I don't find char to return? It was something like null or something. Null OPT. Yes. This was the thing. It was return std null OPT. Yeah. And else, if it's no, not else, but is it going to be else? Okay, Resident Evil 9. Yeah, works well on my system. On Ubuntu or Windows. Resident Evil 9. Arch Linux. So how is it going? Is it working fine?
And what is your PC specs? You are running Resident Evil 9 on Linux. I guess that requires a good PC because Linux is not as good as Windows, ना? अरे अरे धुरंधर, यार धुरंधर देखी? मैंने तो नहीं देखी, देखो अभी तक। मैंने नहीं देखी सही में। अरे एक मिनट यार, मैंने पूल भी तो डाली थी। अच्छा, पोल में क्या क्या चल रहा है? 21 वोट्स आई हैं, ठीक है। तो सी प्लस प्लस और पाइथन सबसे फेवरेट है। लीस्ट फेवरेट जावा स्क्रिप्ट है, एज एक्सपेक्टेड। जावा स्क्रिप्ट से क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे भाई। भले ही बहुत ज़्यादा यूज़ होती है बट इतनी लव्ड लैंग्वेज नहीं है। मैक में 120 प्लस देता। R9 ऑप्टिमाइज है? इतना अच्छा ऑप्टिमाइज किया हुआ है क्या? अगर मैक में दे रहा है तो फिर लिनक्स में भी अच्छा ही दे रहा होगा। मैं सेकंड, मैंने नहीं खेला यार रेजिडेंट इवल अभी तक। ये गेम मैंने कोई भी सीरीज़ नहीं खेली अगर सही बताऊँ तो। रेजिडेंट इवल बस मूवीज़ देखी हैं और कभी यूट्यूब पे कभी देख लिया थोड़ा बहुत, उतना ही बस। आई गेस डाउनलोड करना पड़ेगा। यार किसी ने बोला था मेरे को ना RE9 डाउनलोड करने के लिए, मैंने लगा भी रखा है डाउनलोड पे। करूँगा इसको भी। आई डोंट रिमेम्बर कौन था बट किसी ने बोला था। null pointer. If it is not null, then it's definitely going to be a character. Definitely going to be return. It's going to return a src string, which will be current. Yeah, current. It should return current, and the same thing I'm going to implement inside peak next. Peak next. And, I will just implement this later. I'm going to comment this if attend. Why cannot I use it directly? Why I cannot use this directly? If attend. जिसमें गार्बेज कलेक्टर होते हैं हम उसको रिव्यू भी नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। This could be the day I die for you. No, I have never tried Zig. रस्ट मैंने थोड़ा सा बेसिक सीखा, मैंने रस्ट मैंने देखी है बट जिग मैंने कभी ट्राई नहीं की। नो, नेवर। ओके ओके ओके। बट वाई यार? देखो इतनी लैंग्वेजेस हैं तो कहाँ कहाँ तक कौन कौन सी ट्राई करूँगा? दैट्स द मेन क्वेश्चन यार। पाइथन को रिप्लेस करने के लिए बनी थी। So what is the current situation of Zig in market? Are people using it or not?
Scan if attend use of undeclared item if attend what if we declared it above this. Now it's working. No. I write if at end. It is at end. My bad. Same thing I'm going to implement for advanced, but I'm also going to consume the character. So what I'm going to do is I'm going to increment the current, and the same thing I'm going to return it and not return. Okay, all good. Now there's some issue with this code. Okay, both functions are done. Now the function that I need is tokenize. नहीं यार, मैं घर पे रहता हूँ भाई, बेड इसीलिए बड़ा है, घर वाला बेड है, पीजी वाला नहीं। क्वेश्चन देखो भाई, लड़कों के हैं। नो जॉब्स इन जिग। हाँ तो जिग फिर वही है, एंथुजियास्ट्स के लिए बनी है फिर तो, क्योंकि पाइथन इतना ऑलरेडी चढ़ चुकी है, तो अभी उसको रिप्लेस करना बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे रिप्लेस तो नहीं होता ना। अभी तो वही बात है, कोई दूसरा सर्च इंजन आके गूगल को रिप्लेस कर दे, तो वो तो मुझे नहीं लगता होगा, अनटिल और अनलेस गूगल ही ख़त्म हो जाए। स्कैनर टोकेनाइज। क्या मुझे टोकेनाइज फंक्शन पे काम स्टार्ट कर देना चाहिए? एक ना एरर हैंडलिंग भी चाहिए हमें इसके अंदर। लाइन एडवांस या पीक। एडवांस में एक और चीज़ डालनी पड़ेगी, लाइन नंबर भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। इफ द कैरेक्टर इज कंज्यूम होने के बाद, हाँ कंज्यूम होने के बाद इज अटेंड। तो लेट्स गो बैक, इस अटेंड को पहले चेक करेंगे, उसके बाद कैरेक्टर को कंज्यूम करेंगे। इफ द कैरेक्टर इज if the character is, how can I check this? src str current will be equals \n, and what was the \0 null character, null programming in program, blah. I just need to check for \n. Is \n a character or a string? एट 34 आई गेस 800 समथिंग, तो 800 की लाइन में ही था ऑलरेडी कि नहीं? और भी कम होता जा रहा है क्या हर साल? क्या कर रहे हैं हरियाणा वाले? पैदा होते ही पैक किया डस्टबिन में, भाई ज़्यादा ही हो रहा है क्या वहाँ पे? भाई यही पता है, मेरा तो नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है जितनी भी जनरेशन ना मेरे से बाद में आती जा रही है,
और तुम्हारी जनरेशन में ले लेते हैं, तो वही उनका यही है, जब सब कुछ इंटरनेट पे हम क्यों पढ़े। इसका भी यूज़ करना होता है थोड़ा ना, दिमाग में भी डालना होता है। कुछ चीज़ें रटनी भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करोगे, करना होता है, करना होता है। हरियाणा इंस्पायर नहीं हुआ अभी भी दंगल से। फाउंड है। ये क्या हुआ? ये क्या है? जी हाँ था, माय बैड। सिंगल कोर्स, डबल कोर्स, कैरेक्टर न्यू लाइन। हाँ, तो क्या मतलब हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ कैरेक्टर, सो कैरेक्टर तो सिंगल सिंगल से देखेंगे, सिंगल से देखेंगे, लाइन प्लस प्लस कर देंगे। लाइन में कहीं ना कहीं स्ट्रिंग में हमारे बैक स्लैश एन होगा या नहीं होगा। You can reverse engineer, you can do some productive meanwhile now, like reverse engineer. uh, I don't think I'm that good, I can start doing reverse engineering directly, reading assembly and start doing reverse engineering. I don't think I'm at that level, and I'm not trying to go for, that reverse engineering hacking and cracking stuff. No, not into that. But I'm trying to, what I'm trying to do is do not to go into that line. I'm just trying to go with a simple basic compiler just for a better understanding of code, better understanding of C++, and many more things. I've tried backtracking. I've tried reading a little bit about backtracking. I've also tried this IDA. I've also tried, where's that software? What was the name? GADX, and there was one more. It was Kidra something. I don't exactly remember. I have even used that software. I've tried, but I am not into that. I'll just stick with my compiler. I'm good with I'm good with it. Is this a Linux distro? Yes, it is a Linux distro. It's Ubuntu. So I think I'm happy with these two functions, which are peak and advance. I'm going to implement that error thing later. I can do that later. Error handling can be done later. So thing that I need is tokens. Then let's go with the tokenize. And without a slots. Thank you, thank you, thank you. Yeah, I am trying it by myself. If I get stuck in something I don't know about, I'm not very good with C++, so I just go to Google and Google some stuff and try to understand what does that mean, or is there any different way to do that. That's what I'm trying to do, just for a better understanding. There's not something like I'm going to release a whole new compiler. That's tokenize. So I have source a string, and I'm going to run it till it's. Why did it choose Ubuntu? I have tried many different, Linux distros like Mint, Arch Linux, and Kali, and different, but the most stable one and most peaceful, it's Ubuntu. I've tried many different, but I'm back to Ubuntu. Started with Ubuntu and I'm back to Ubuntu. It's my favorite, all-time favorite. I can do anything with Ubuntu, which I can do with any other distro.
Substring. What I need is while. Src string dot length is start 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 and string, but I don't need this start. What do I need? This start and current. I'm stuck. Scanner class. A scanner class. We have tokens. Yes, source. The source. Okay. Scan tokens while not equal and not equal to current. Scan tokens. Line number 1. That is a good way. I can use a scan token function separately. And token, scan token. Very good. So what I'm going to do is scan token. Scan. Oh, my bad. It will be of type void because I only need to scan token. Void scan token. मुझे की दुनिया की सारी चीजें ट्राई वो तो है ही यार. तुम खाली एक फील्ड पकड़ोगे वो भी इतना वास्ट हो जाता है. सीएसबी वो भी नहीं कर सकते. स्कैन टोकन के डेफिनेशन भी देनी पड़ेगी मेरे को. डिक्लेरेशन. ये रहा मेरा फंक्शन क्लास. कुछ गड़बड़ ये स्कैन टोकन में क्या था. सबसे पहले तो मेरे को चेक करना है वाइल, नॉट वाइल बट दी कैरेक्टर जो मैं उठाने वाला हूँ. तो विच विल बी एडवांस. अगर मुझे कैरेक्टर मिल जाएगा. करंट भी अपडेट होना है. करंट इंडेक्स. Then I need to check which token is that token, which will be switch statement. Nah, if C, yeah, C. It will be pointer. Advanced ADBANCE, advanced ADBANCE. What is wrong? Identify advance, undeclared identify advance. Why is that? Why undeclared? Advance. Click next. यहाँ पे इशू क्यों आ रहा है. एडवांस डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ. होना भी चाहिए. ओके बिकॉज स्कैनर नहीं लगाया मैंने. स्कैनर स्कोप रेजोल्यूशन ऑल गुड. अभी भी दिक्कत है. कोड में कहीं ना कहीं इशू तो है अभी भी.
let's just see it later. If the conversion exactly, इसीलिए यहाँ पे pointer की ज़रूरत थी. If the C is space, which will be C, I'm going to skip it. Skip it. Advance, 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 advance. Already हो जाएगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Space. Then I'm going to continue, but I need to run this inside. तो नहीं यार, एक लूप के अंदर इस फंक्शन को चला सकते हैं. स्कैन टोकन, टोकनाइज के अंदर length if it is greater than or equal to नहीं, करंट की लेंथ चेक करनी पड़ेगी. while current is greater than equal to के लिए करना बहुत टाइम, जल्दी पहुँचते हैं अपने को तो अकेले. बिल्कुल सही बात करी है. नो डाउट, नो डाउट यार. गोल तक जाना अकेले जाओ, लेकिन अगर बहुत दूर जाना है तो भाई फिर तो चाहिए साथ में. अकेले नहीं होता. फिर तो बहुत ही रेयर कैटेगरी है जो कर दे. if the current which is my index, बट न्यू लाइन का पता नहीं लगा मेरे को. तो यहाँ पे मैं चेक नहीं कर सकता. एडवांस ये चीज़ चेक नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रिंग रहेगी. स्ट्रिंग में ये बात मैं नहीं निकाल सकता कि वायलेट करना. क्या एडवांस इसको चेक कर सकते हैं? मुझे यहीं पे ना पहले चेक ही करना पड़ेगा. अगर मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ उसके बाद मैं लिखता हूँ, यहाँ पे नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ. मेन एंटर है, रिटर्न 6 7 8. Be my scanner class. While current is greater than equal to string. Yeah. Scan token. फाइल में मैन्युअली डालेंगे. set end. करंट को प्लस करना है एंड देन
ठीक है ठीक है। नाइस। स्पीक। if it is a digit। आप न्यू वेम यूज़ कर रही है? हाँ यार, न्यू वेम यूज़ करता हूँ मैं लिनक्स पे। तो जहाँ पे थोड़ा टाइपिंग का काम ज़्यादा है वहाँ पे न्यू वे में प्रेफर करता हूँ मैं। बाकी वी एस कोड भी सही है, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए वी एस कोड ज़्यादा बेटर रह जाता है। if अगर वेब डेवलपमेंट का काम करना हो ना तो वी एस कोड ही यूज़ करता हूँ मैं मोस्टली। जेड। जेड मैंने जेड ट्राई नहीं किया। जेड लेकिन जहाँ तक मेरे को आइडिया है खाली मैक ओएस के लिए है। एम आई राइट? लिनक्स पे मे भी मिल जाए। यार and tokens does not match। अब इसमें क्या दिक्कत है? आई गेस फाइल सेव नहीं हुई है ज़्यादा से ज़्यादा। इट्स tokens। tokens डेवलपमेंट। नहीं यार, फ्लटर में नहीं किया। नेवर ट्राइड इट। थोड़ा बहुत कॉटलिन में किया है, थोड़ा बहुत उसमें रिएक्ट नेटिव में ट्राई किया है, बट फ्लटर में नहीं किया कभी। फ्लटर कभी ना, मतलब ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई ना, तो कभी ट्राई किया ही नहीं। ट्राई करने को यार इतनी चीज़ें हैं भाई, कहाँ कहाँ तक ट्राई करेंगे, थक जाएंगे। ये चीज़ें मास्टर करने में टाइम लगता है। यार मैं ना अब इसको लेके थोड़ा सा हो गया हूँ कंफ्यूज। अब मुझे वापस पीडीएफ खोल के देखनी पड़ेगी। मैंने क्या क्या कर लिया है। एरर हैंडलिंग अभी भी उसी पे। ठीक है। टोकन टाइप। इसने ऑब्जेक्ट टाइप का लेटर दिया, मुझे ऑब्जेक्ट टाइप की ज़रूरत नहीं है। एक आप ही के कॉलेज की दीदी है, वो अमेजोन की इंटरव्यू टिप्स देती है। हाँ यार, मैं अभी इसी बुक को फॉलो कर रहा हूँ मैं ना। इसमें ना जावा में इंटरप्रेटर बताना बताया हुआ है, लेकिन मैं इसी के हिसाब से बता चल रहा हूँ। इसने बहुत अच्छे से चीज़ें बताई है, बहुत कॉम्प्लेक्स भी नहीं है और बहुत ऐसा लो लेवल पे भी नहीं है कि बहुत बेसिक्स ही है, थोड़ा सा इंटरमीडिएट मैं कहूँगा। बहुत सही बुक है। स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास जिस पे मैं काम कर रहा था। स्कैनिंग। टोकेनाइजिंग लिक्स में स्विच कीज ये तो हो जाएंगी। बट स्कैन टोकन्स
फिर एक स्कैन टोकन बना देता हूँ, बाद में एडवांस टाइप होगा वो बाद में भी कर सकता हूँ। प्लीज कहना चलो। चलो मैच, एक मैच फंक्शन किस लिए? once you only consume the current character if it's what we are looking after. ओके, ये बहुत सही तरीका लगा मेरे को। इसने इसी के साथ कंटिन्यू किया हुआ है। अच्छा, खाली ऑपरेटर्स और इस टाइप की चीज़ों को पहले स्कैन कर रहा है, बट अभी डिजिट्स सेंड उसको नहीं किया, स्ट्रिंग्स को। डमीज बुक नाम की बुक भी आती है ना। ये सब कैरेक्टर्स के बीच, ये मैं समझा नहीं, ये वाली लाइन ना, ये कैरेक्टर्स के पीछे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की 01 से ये बनाया है। तुम क्या पूछ रहे हो, ये कंपाइलर कैसे बने हैं? स्टार्टिंग बिल्कुल ज़ीरो की बात कर रहे हो, जब स्टार्टिंग में कभी 01 में काम होता था। लॉन्गर लेग्स में, लॉन्गर लेग्स में हिस्ट्री मशीन ये ऑपरेटर, ठीक है। कीस कीस कीस, मैच ये वाइल, कमेंट्स के लिए भी किया था, ठीक है। अनदर हेल्पर, के डायरेक्ट लास्ट का एंड ऑफ फाइल रिटर्न कर देना, ये ज़्यादा बेटर है। अबे पता है, ब्लैक मिरर मैंने देखी थी ना, वो फील मेरे को भी आ रही थी कि यार कुछ ही साल है, ये सब रियल में होने लगेगा लिटरली। वो फील आती है, ऐसा नहीं लगता कि ब्लैक मिरर के एपिसोड अभी के लिए तो, हाँ माना बहुत फ्यूचरिस्टिक है, बट ऐसा लगता नहीं है कि मतलब ऐसा हो नहीं पाएगा। लगता है भाई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ऐसा फ्यूचर। आज अब हो जाएगा, सही कह रहा। अच्छा, उसका वो वाला एपिसोड देखा, वाइट क्रिसमस, वो सबसे टॉप का एपिसोड है, वाइट क्रिसमस। Another helper, look ahead, look ahead, look ahead. इग्नोर वाइट स्पेस, बहुत बढ़िया। इसने ऐसे ही इग्नोर कर दिया, वहाँ पे लगा पड़ा हूँ। इस ओ हो एक्सलेशन, सब कुछ भाई, एवरीथिंग इज डन विद इन वन फंक्शन between those switch cases. Can I do this? Can I do this? Can I? Let's take an example. If I have a advanced function, is space, no, not is space. But what I'm going to do is I am going to check it via switch. रेड लोगों की यादें कलेक्ट करके उनका भी मॉडल बना देंगे। भाई कह नहीं सकते कितना दूर है ये चीज़, बट इट मे बी पॉसिबल यार।
सैनफोर्ड किचवेलम पढ़, मतलब उन्होंने स्क्रैच से अपना पूरा मॉडल क्रिएट किया गया। कहाँ से आ रहा है, एक सेकेंड। बारिश तो नहीं आ रही। नो, उनकी वेबसाइट भी है, उनके मेमोरीज की, उनके मेमोरीज की जो मतलब पूरी अपनी वो बायोग्राफी लिख रहे होंगे उसमें। सैम अल्टमैन उनका स्टूडेंट है, वो तेरी। नाम क्या है उनका? नेम ऑफ द प्रोफेसर, स्विच let's see his keys that I'm going to check is, the first thing is star, which will be of token type. So what I'm going to do is tokens dot push back. I'm going to push back. क्या कर रहे हो भाई? यार मैं कंपाइलर बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, बेसिक कंपाइलर, मतलब सी प्लस प्लस को जो कंपाइल कर पाए उसको ट्राई कर रहा हूँ। पुश बैक, टोकन डॉट पुश बैक। पुश बैक क्या करना था मुझे? टोकन, टोकन ही करना था। एंड टोकन में टोकन टाइप, which will be token type, it was star, yeah, yes, it was star. And the next thing that I need to pass is empty value, because there is no value. Yeah, LM को फीड कर दिया, LLM को फीड कर दिया है सर। अभी LLMs देखा जाए तो AI अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं है। अभी वो सिर्फ एक प्रिडिक्शन लेवल पे ही काम करते हैं। अभी AI में कॉन्शियसनेस ये सब अभी तो बहुत दूर है, लेकिन जब कॉन्शियसनेस लेवल वाली चीज़ें आ जाएंगी, इमोशंस, तब चीज़ें बहुत ऊपर चली जाएंगी, तब ये सब ज़्यादा पॉसिबल होगा, जो जो भी तुमने ब्लैक मिरर में देखा है। पहला तो हो गया। and अभी हमें बहुत सारे केस बनने वाले हैं। अभी क्या करूँगा मैं? कॉपी पेस्ट कर, वो तेरी। हाँ, क्या गड़बड़ कर दी? अच्छा, सीक्वेंस डॉट पुश बैक, एक हो गया स्टार के लिए। स्लैश के लिए बाद में देखेंगे, स्लैश थोड़ा सा अलग केस है, स्पेशल केस है। विच विल बी, एक प्लस का बनाते हैं, देन माइनस। यार पाइथन तो ऐसी लैंग्वेज है, करियर ऑप्शंस बहुत हैं। पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, एंड तुम्हारी जावा हो गई। ये अभी मार्केट्स में ये लैंग्वेज बहुत चलती हैं, मार्केट में सबका बहुत ट्रेंड है। अभी कॉलेज कर रहे हो आदर्श? आर यू अ कॉलेज स्टूडेंट? भाई कुछ कुछ एपिसोड बहुत डिप्रेसिंग है यार, बहुत डिप्रेसिंग। एक वो है कॉमन पीपल, कॉमन पीपल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही है। भाई वो एपिसोड डिप्रेसिंग है कि इंसानों को कहाँ तक मजबूर कर सकते हैं भाई कॉमन पीपल। उप्स, ब्लैक मिरर, कॉमन पीपल। सीजन 7 का फर्स्ट एपिसोड है, मैंने बोलता ना कि कोई भी देखो सीजन 7 का फर्स्ट एपिसोड, भाई देखना, इतना डिप्रेसिंग है ये एपिसोड, देख के बुरा लगता है भाई उस बंदे के लिए। हाँ, मतलब कॉलेज स्टार्ट होने में अभी 2 मंथ बाकी है। अगर कॉलेज स्टार्ट होने में टाइम है और
नहीं, अगर तुम एआई परस्यू करना चाहते हो, एआई के फील्ड में ज़्यादा फोकस्ड हो, तो पाइथन अभी से स्टार्ट कर दो, बेटर है। बट अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि पहले ना सी प्लस प्लस पढ़ लो, सी या सी प्लस प्लस। क्योंकि फंडामेंटल्स जो तुम्हारे प्रोग्रामिंग के होंगे ना, वो इसी से स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होंगे, पाइथन से उतने नहीं हो पाएंगे। बिगिनर्स के लिए इजी है नो डाउट, और सी प्लस प्लस टफ हो जाती है, लेकिन वर्थ इट है। जितना टाइम वेस्ट करोगे ना सी प्लस प्लस में, वर्थ इट है। 1 2 देख लिया? अच्छा, 1 और 2 दो सीजन देख दिए एक दिन में? बहुत स्पीड है भाई। मैं ना रैंडमली उठाता हूँ, मेरा जो मन करता है मैं रैंडमली उठाता हूँ, रैंडमली देखता हूँ। बहुत कई कई दिन बाद देखता हूँ, ताकि थोड़े लंबे टाइम तक चले, आराम से देखता हूँ। असेंबली से भी शुरू कर सकते हैं, वाह वाह क्या बात कही है। नो डाउट। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे भी अभी ना यहाँ सी प्लस प्लस छोड़ के असेंबली में डायरेक्ट वो करनी चाहिए, कोडिंग। क्या कहते हो? पोल्स का क्या चल रहा है, लोगों की क्या फेवरेट लैंग्वेज है? देखते हैं रिफ्रेश करके। 29 वोट्स हो चुकी हैं, सबसे ज़्यादा वोट्स आई है पाइथन के लिए भाई। देख रहे हो? तो अभी पाइथन ऑन टॉप चल रहा है, जो भी हमारी लाइव में बंदे हैं उनके हिसाब से। पाइथन ऑन टॉप, उसके बाद सी प्लस प्लस। कोई तो ऊपर नीचे कर रहा है वोट को। अच्छा, 30 वोट्स हो गई है। 43 फॉर पाइथन, सी प्लस प्लस भी जीत सकती है। देख रहे हो, सी प्लस प्लस में भी चांस है जीतने के, पाइथन को हरा सकती है सी प्लस प्लस। वो तो, बट मेरे एक दिक्कत है, लाइक पापा ने सिविल कोर्स में एडमिशन दिलवा दी, बट मुझे आ रहा है, और मुझे एआई ही परस्यू करना है। क्या कर सकता हूँ? एआई ही परस्यू करना है तो लग जाओ भाई पाइथन। चार्ट दो पूरी, चार्ट दो पूरी, पाइथन ख़त्म कर दो। जितना पहले पाइथन पूरी बेसिक फटाफट ट्यूटोरियल ख़त्म करो, बाद में कुछ बेसिक प्रोजेक्ट बनाओ, बाद में एडवांस प्रोजेक्ट बनाओ, बाद में एआई में घुस जाओ, एआई की चीज़ें, एआई के स्टफ एक्सप्लोर करो। ओ तेरी। अरे यार, ये खोल दिया मैंने, ओबीस खोल दिया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, वो पूरा इन्फिनिट चला गया। माय बैड। एपिसोड मस्त था, सीजन 1 एपिसोड 3, आई डोंट रिमेम्बर कौन सा था। S1। भाई कंपाइलर तो बन गया मुझे लग रहा है आज। मैं आज एक दो एपिसोड तो देखूंगा यार इसके। अच्छा, ये वाला, हाँ ये बड़ा सही था। एंटायर हिस्ट्री ऑफ यू, ओ माय, बहुत सही है। देखा है मैंने। लाइक कोई दिक्कत नहीं है ना सिविल का। अ, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मतलब सिविल में जाओ और फिर मतलब बीटेक या जो भी तुम कोर्स परस्यू कर रहे हो उसमें बीटेक में करो, और उसके साथ में तुम एआई की पढ़ाई करो, ताकि तुम बाद में एआई की जॉब उठा सको। अगर ये चीज़ सोच रहे हो तो भाई देखो, एआई बहुत टफ हो जाएगा। अगर तुम इन डेप्थ एआई में जाना चाहते हो, एआई की यूजेज का अलग हो गया, एक एआई की जो R&D वाला फील्ड होता है, अगर उसमें जाना चाहते हो तो भाई मैं कहूँगा बीटेक कंप्यूटर साइंस ही थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं। क्योंकि तुम सिविल लोगे, अपना भी पढ़ोगे, कोडिंग के लिए भी टाइम निकालोगे, तुम सीख लोगे, तुम डेवलपमेंट सीख लोगे। लेकिन जितना तुम सीखोगे यार, उतना तो भाई एआई आजकल कर देता है, इसीलिए तो जॉब खतरे में है। अगर पॉसिबल हो, अगर तुम्हें जाना ही कोडिंग में है, आजकल जॉब्स तो वैसे भी बहुत घटिया चल रही है, लेकिन अगर तुम्हें जाना ही कोडिंग में है तो भाई फिर मैं कहूँगा बीटेक अगर मिल जाए तो बेटर है। सिविल में रह के ना तुम बस वही दिक्कत है यार, स्प्लिट हो जाएगा ना तुम्हारी पढ़ाई। सिविल की अलग चल रही है, उसकी अलग चल रही है, तो उतना तुम एफिशिएंट मे भी नहीं हो पाओ, उतना टाइम नहीं दे पाओ। और अगर तुम्हें बात है, तुमने दे दिया टाइम तो बहुत अच्छी बात है, फिर चांसेस है करियर की। अब कई कंपनीज में ये भी है कि यार, वही दिक्कत है। नहीं, कुछ कंपनी में ना देखो यार, अब कह तो देते हैं कि ठीक है स्किल बेस्ड पे होता है, बिल्कुल होता है, स्किल पे होता है, चाहे डिग्री कोई हो, ये भी कहते हैं। बट सही बताऊँ तो यार, मोस्टली कंपनीज में देखोगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि भाई तुमने बीटेक किया है तो एलिजिबल हो, नहीं तो वहीं पहले ही रिजेक्ट, तुम्हें बैठने ही नहीं देंगे, पूछेंगे ही नहीं तुम्हें। ये दिक्कत है।
एक बार को ईसी स्टिल बेटर। सिविल वालों को तो यार मुझे लगता नहीं देख के कंसिडर भी करेंगे काफ़ी कंपनीज। मतलब मोस्टली एक जो नॉर्मली तुम जॉब रोल के लिए अप्लाई करते हो, जो मोस्टली जो चांसेस होती है उसमें रिजेक्ट होने की चांस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जस्ट बिकॉज क्योंकि एलिजिबल नहीं हो ना उसके लिए। डिग्री अलाउ नहीं। 3 इयर्स डिग्री अलाउ नहीं करती फैंग। मतलब तुम बीएससी की बात कर रहे हो ना? बीएससी या बीसीए? मैं एक बार अपने थोड़े केस बना देता हूँ यहाँ पे। इट वाज तेरी क्या था, मैंने क्या क्या बोला था यार? टोकन्स में प्लस माइनस स्टार स्लैश मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का अभी यूज़ नहीं कर सकते अभी। इसको ना मैं मॉड लिखूँगा, पूरा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। दैट्स गुड। So the thing is, after this, I'm going to do break. Yep, break हो गया। And after this, I have plus value empty होगी, बिल्कुल होगी। Then we have break। ये प्रेशर तो देखो ऐसा नहीं है, बट मतलब सच घर वालों की तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि भाई तू जा कमा, तेरे तू नहीं कमा रहा तो घर नहीं चल रहा, वो वाला सीन है मेरे यहाँ नहीं है। तो इसीलिए मेरे को ऐसा प्रेशर फील नहीं होता, और इस वजह से ये यही सबसे घटिया चीज़ है जिस वजह से मैं इतने अच्छे से अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। सही बता रहा हूँ भाई, मैं अच्छे से अप्लाई नहीं कर रहा इंटरव्यू में तो जब बैठूंगा। शौर्य सिंह, शौर्य के लिए क्वेश्चन आया है। बीटेक सीएससी में हो क्या? लेट्स गेट बैक टू वर्क। यस, we have this, we have this, we have this, we have this. So we have plus minus, it was minus. Then we have strike। यार मेरी 25 में बीटेक कंप्लीट हो गई है, एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस। प्लस माइनस। और क्या क्या था यार? इतने सारे मैंने टोकन यहाँ पे लिखे थे। प्लस माइनस स्टार स्लैश और मोड। मोड को मैं हटा देता हूँ, अभी के लिए मैं यूज़ ही नहीं करूँगा मोड। वी हैव इंटीजर, वी हैव कैरेक्टर स्ट्रिंग इंट लिटरल बूल, ये डिफरेंट हुए। देन वी हैव बैंग, बैंग इक्वल्स क्रिएटर इक्वल्स लेफ्ट पैरा। ओके, डॉट कॉमा हाइफन। हाइफन नहीं होगा, माइनस होगा वो, हाइफन यूज़ नहीं करेंगे। देन वी हैव डैश, डैश वाज द अंडरस्कोर, इसको यूज़ करते हैं। मैं इसको भी अभी के लिए हटा रहा हूँ। देन वी हैव डॉट कॉमा सेमीकोलन। देन वी हैव डॉट, कम ऑन यार, डॉट कॉमा। जीसॉक के लिए आपने ट्राई किया? प्लीज़ भाई मत बोलो। मैं जीसॉक में, तुम्हें पता है मैंने लिंक्डइन पे ना पोस्ट डाली थी कि जीसॉक
आ रहा है, ठीक है, उसमें सब अपना पार्टिसिपेशन ले लेना जिस जिसको करना है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और पता है क्या, मैं बीच में कुछ दिन बाहर घूमने क्या गया और मैं यही भूल गया कि जीसॉक की डेट निकल चुकी है। मैं अप्लाई करना भूल गया टाइम पे। ये हुआ मेरे साथ। और बाद में इतना बुरा लगा ना भाई। ओपन सोर्स के लिए मैं, मेरे को वो थी यार कि हाँ भाई करना है, थोड़ा सीखना है, लेकिन नहीं, मैंने चांस मिस कर दिया। सब पूछते हैं क्या इतने दिन का गैप? इंटरव्यू डिपेंड करता है। अगर कंपनी को भाई, देखो मेरे एक भैया हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो ही बता रहे थे कि देखो गैप का ऐसा है, कंपनी को लेना है वो भाग के बंदों को लेगी। उनका, उन्हें मतलब नहीं है गैप है नहीं है। और जिस कंपनी को नहीं लेना, फालतू के ड्रामे करने हैं, वो गैप पूछेंगे, ये करेंगे वो करेंगे और नहीं लेंगे। अगर कंपनी को ज़रूरत है कंपनी लेगी, कोई मतलब नहीं है कि गैप है या नहीं है। हाँ थोड़ा पूछते भी हैं कि हाँ भाई मतलब इतना गैप क्यों आ रहा है, दे दो अपना सही सही रीज़न। बिल्कुल सच भी नहीं बोलना, बिल्कुल झूठ भी नहीं बोलना। मेरा तो सिंपल है भाई, कन्वर्जन नहीं हुआ वहाँ पे, और कुछ ऐसा नहीं है। ये तो बहुत ही ज़्यादा हुआ। क्या हुई, क्या बुरा हुई? ठीक है, था माइनस, था माइनस 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 माइनस। ठीक है, डॉट हो गया, यू टी, देन वी हैव कॉमा, विल बी कॉमा, oops oops oops, then we have a semicolon, semicolon. Okay, so the next thing, dot comma semicolon, class if else true false and char, ये डिफरेंट चीज़ होगी। देन वी हैव लेफ्ट पैरा, अभी हम सिंगल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो ये सब चाहिए, लेफ्ट पैरा राइट पैरा, लेफ्ट ब्रेस राइट ब्रेस। आई एम गोइंग टू रिमूव these two also because I don't need it, not right now. So for this I'm going to add four cases of one, two, one, two, three, four. And in these cases, kuch syntax issue. No case statement is not in switch statement. Oh, ये गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। स्विच वाला, स्विच वाला किधर है? ये है, ठीक है। to copy this, copy, then we paste, paste. एक और चाहिए यार, एक कम कर दिया मैंने। डन है। then we have parenthesis, this one, left brace, then we have right brace, semicolon, it will be 30, oops, 30 down, 30 right. ये था लेफ्ट ब्रेस, बहुत बढ़िया। राइट ब्रेस, बहुत बढ़िया। then we have left, will not be brace but it will be brace, तो यही है यार, वो तो पैरा है, पैरा पैरा पैरा, माय बैड। जैसे
हैकाथॉन में सारे कॉलेज वाले डिफरेंट डिफरेंट हैकाथॉन्स के अलग अलग रूल होते हैं। देखो मैंने पर्सनली कभी पार्टिसिपेट नहीं किया बट जितना पता है डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं। कुछ होते हैं काले कॉलेज लेवल के, कुछ अलग कुछ अलग। मोस्टली वैसे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ही होते हैं हैकाथॉन ना। अब ये मैं नहीं कह सकता कि हाँ कुछ कॉलेजेस, सिर्फ कुछ ही कॉलेजेस अलाउड होते हैं। अब इसका मुझे नहीं पता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगता है वो। राइट प्लीज। ठीक है, ये सारे केसेस तो कवर हो गए, ऑपरेटर्स हो गए एंड देन डिफरेंट केस। डिफरेंट केस स्लैश का केस बनना था। स्लैश का क्योंकि कमेंट भी चेक करना है, कमेंट का सपोर्ट भी चाहिए, कमेंट का सपोर्ट भी चाहिए मुझे। Do that. गुड नाइट, आप भी सो जाओ अब। चलो ठीक है, शौर्य गुड नाइट, गुड नाइट, सो जाओ यार आप। मैं भी बस थोड़ी देर में जाने वाला हूँ सोने। अभी तो मैंने खाना भी नहीं खाया यार, डिनर भी नहीं किया था। अभी थोड़ी देर बात करूँगा। सी है बडी, सी है। Okay, so let's push now. It will be case will be of type slash. If it is a slash case, then what we are going to do is we need to check. We need to check what? While, not while. If they peak next. पीक नेक्स्ट, तो पीक नेक्स्ट को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। पीक नेक्स्ट को लिखना पड़ेगा। पीक नेक्स्ट फंक्शन किधर है? पीक नेक्स्ट, अब इस फंक्शन की ज़रूरत मुझे पड़ेगी। विल बी पीक नेक्स्ट एंड यहाँ से भी अनकमेंट। oops, गलती से डिलीट, फिर से डिलीट। क्या कर रहा हूँ मैं? जी बहुत बढ़िया। एंड optional peak next. No, right function does not return a value. I don't care. What I need is if is at end. So what I'm going to do is return cd peak next के लिए क्या करंट को। पिक नेक्स्ट हमेशा ऐसे टाइम पे होना चाहिए जब एंड ऑफ फाइल ना हो या एंड ऑफ लाइन ना हो। लास्ट में नहीं होना चाहिए, बट मे बी पॉसिबल कि लास्ट वाला स्लैश हो। देन पिक नेक्स्ट हम कर दें तो गड़बड़ हो जाएगा। स्टार्ट, ये थोड़ा सोचने वाला पॉइंट है। पीक नेक्स्ट का जो केस था, नंबर लिटरल नहीं, इससे मतलब नहीं। पीक नेक्स्ट इसने समझाया था मेरे को।
peak next, ये यहाँ क्यों, see you, build this a fallback, error handling, then we have peak next, peak next, peak next कहाँ समझाया था, मैच बताया था. Then what we need is that peak next, peak next, peak next. Need add token. यार ये भी सही है, ऐड टोकन का एक फंक्शन बना के कॉल कर दो तो इतना सारा जो रायता फैला है वहाँ पे वो भी कम हो जाएगा. इट वुड बी गुड. String substring. This was for string. Case was this. What about literals? वो चीज़ें आप एक्सप्लेन नहीं किया. Our scanner is getting smart. It can handle fairly freeform code like this. What we need is next. Operators हैंडल करने के लिए the current plus one. ओके ओके, सेफ्टी के लिए यही यही मैं कंफ्यूज हो रहा था, यही वाली लाइन में कंफ्यूज था. इससे डायरेक्टली मैं डायरेक्टली चेक नहीं कर सकता क्योंकि वो एरर करेगा, बिल्कुल करेगा. इफ दी src डॉट नहीं src स्ट्रिंग बट लेंथ current plus 1 is equal to, not is equal to, but is greater than is equal to, so it's dot length. Then that means it is a we cannot peek next. This is, then what we are going to do is return standard null option, then that means that current plus 1, so we can return src string which will be of current plus 1, current plus 1 length, and no, this much is enough. We can peek next without any issue. What is the issue now? Okay, semicolon. Yes, we can peek next now. If the case is this, going to add break, if the if the peek next is also slash, peek next pointer is also going to be a slash, then it will be a comment. Yeah, it will be a comment. Then what we are going to do is, until we find a enter which is \n, I'm going to just continue and skip. Yeah, I'm going to skip it.
Come on, yaar, come on. पता नहीं अभी क्या इशू बता रहा है, इसको भी देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके, इसको कंटिन्यू करते हैं। while it will be एडवांस से चेक करूँ। पीक नेक्स्ट किया है, यानी करंट अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। स्लैश दिस while टिल कहाँ तक करना है? until I get a backslash n, that is for sure. एडवांस एडवांस करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि हमें बस ख़त्म करने से मतलब है। दिस विल बी द कमेंट लाइन, को ट्रैवर्स करना है। I can just continue, and after continue with advance, it will automatically increase the current line, the current pointer, which so if it is not peak next case, if it is not a peak next case, that means it is a token of slash. So what I'm going to do is, first of all, I need to make a function type star, token type star. No, I don't need a function. I'm just going to keep it like this. And it will be else it is going to be a it will be a tokens dot pushback of type token, and क्या टाइप कर रहा है? This was the case which was of token type of slash, yes, slash, token type slash, oopsie, caps lock on कर दिया, slash, and the value will be this empty value, the keys. Is okay now. I just need to add a semicolon. Okay, after adding this semicolon, the next thing that I need to do is, I've handled this case. I also need to handle about these, the greater than, less than, yeah. Also equals to, where is equals to? Equals to is not here, and that is good, that is good, that is good. So the next case will be of type equal. If it is of equal type, what I'm going to do is, I'm going to do the match. I need to write a match function. Yeah, a match function for this, which will be a boolean type match, match character. Match char will be my function, and inside this file
For example, if it is equals to, I need to match. What I'm going to do, match it with the next one after consuming it. Peak next. Peak next will not be this. I'm already doing advance. That means I'm getting the first character, which is star. I am proceeding. Then I need to check peak. Now this is confusing. Digit. Is digit. Reverse word and identifier. No, not now. What's the case of backslash n plus? Also, I need plus peak. Match. It was match. We don't need peak next. We need match. What match is going to do is match it with the previous character. If I'm not wrong, it is going to match it with the previous character, not the next one or the current one. Is it? I'm just going to return false. Source character at current not equal to expected. The character that we are matching. If it is not equal to expected, we are returning false. If it is expected, then true. It's a simple function. So I can make this simple function, which will be of type bool. Yeah, boolean was the type, and we need scanner colon match. We are going to match see how is the poll going on. There are 37 votes, and most of the votes are in favor of Python. Most of you people like Python and not C++. Also JavaScript is only 11%. Also Java. Damn. That's good. Let's go for match. I'm going to pass the character of the expected this name. If it is not the if is at end, then I'm going to return false already. Return false, and if the src str to the str the current position, if it is not equal to this expected, then I'm going to return false for this also. Else what I'm going to do is I'm just going to return the
It will be current plus plus also return true. Let's check it again. If we are at the end, return false definitely. If we are source current, caret current, expected, if we are going to return false, that is good. This function is going to work fine now. We have this, then we need to do the match. We're going to match. If match occurred, which will be of type equals to. Yes, that means it is equals to. It is a comparator operator. Then if it is not, then what I'm going to do is else. If it is not, then we're going to add it to the tokens pushback, which will be of type token, and I'm going to tell him that oopsie, I deleted pushback token. Then what I'm going to tell this guy, your token type is equal, and the value is nothing. Expected this, after this, my bad, semicolon. Then we have a break. Yeah, break. I also need a parenthesis. And going to remove this. There's no issue. Here's a comparator. Then the tokens dot pushback. Tokens. I say tokens. Token type. Token type of it was equals underscore equal. The value will be nothing. This is the case that I have handled for equals. Now I also need to handle this for greater than and less than. I'm just going to copy this one and paste again. The thing is, if we have this and this, we need to match this. Greater equals, it will be less equals. This is for less equals. So I did something wrong. Oopsie. Let's go. It was equals. Equals. Less equal. Else it is going to be just a less sign. It will be less only. And what is the issue with this code? It needs a semicolon here. So what is the next thing?
ठीक है, बस 4-5 मिनट और फिर मैं लाइव एंड करने वाला हूँ। जस्ट मैं इस फटाफट इस केस को फिनिश कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे भी ये रह गया था, केस यहाँ तक भी कवर हो गया। क्या बचा है अभी? मैंने कितने केस कवर किए हैं? पुशबैक मैच इक्वल्स टू तीनों में इक्वल्स टू ही चेक करना है। ओके, एक और केस था, एक और केस रह गया है। वन मोर केस to be yanked and I need this for bang, 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 bang. It will be bang equal. It's going to be bang equal. Else it is going to be a bang. Yeah, a simple bang. It will be bang or it will be equal, it will be less, it will be greater, greater, greater. My bad. Greater. Else it is going to be a greater. So many cases we have handled. There are so many cases. With the help of switch case, it just looks good. It looks good. If it was supposed to, suppose it was if else case, then it would have looked very ugly. What is the case? I'm going to keep it at the last side. So the cases that I handle is plus, minus, star, slash. I have bang, bang equal, greater, greater equal, less, less equal, 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 equal. All these cases have been handled. Then we have left para, right para. All the braces. These cases have been handled. Okay, so I also need for dot, comma, and semicolon. Semicolon is done. I need one comma and dot. Dot, comma, semicolon. Okay, these are done. These are also done. What I need is these one. I need to parse the strings. I need to parse the strings. Is digit. Is digit. Is digit. Yes, something is wrong. Bang equal column value push. Bang equals. Is there something wrong? Bang equals. It is going to be equal, not equals. Now it is okay. So the next error that we have is of type match. Scanner match. Where is scanner match? Boolean match care. It is match care. My bad. What I'm going to do is just replace this one. So most of the errors are fixed now, and we have match. Too many arguments to function call expected 0.
because I have not given any parameter here, which will be care of type expected type. So what is the next issue? We have return issue because of semicolon missing. Fixed. So the whole file is fixed. It's working. That is great. It's great. I guess I need to test the file. Where is my file? Where is my file? Which is just tc C. I'm just going to check these. Will be comments in my file, and comments in my file. So we have characters now, we have parentheses, we have different characters, which is star, exclamation, and also curly braces. Let's check. Let's try for what was that? Just slash, and then we can have a space. I'm going to add some what was the operator? It was minus, then we have plus again. I need to check if I am able to parse these. Is my scanner going to parse these characters? We are going to add in tokens, scan tokens. We can scan tokens while the current dot length. Okay, then we are good to go. I just need to call the function in this function, scan tokens. That is scan token, and this is scan tokens. So inside scan tokens src, it was scan token. I don't need to pass anything while the current is greater than or equal to src string dot length. So I'm just going to scan. Is there any other thing that I can do? I think not. Let's just try compiling this file. Comment in my file. What is this? Okay, it is because of the main file, because I have a stdc out. I did it wrong. I need to include the scanner file in this file. I need to include this file. Include, which will be of scanner.h, not h but cpp. Next we need h file. It's going to be inside this. Wrong, my bad. Now I need to scanner.h. What I need is a object for my scanner class. Currently I am not I have not studied up to the parsing part. I have only understand how to do the scanning and how to create tokens, how to make tokens. I'm not sure about the parsing algorithm right now. Currently I'm following a book which is called Crafting Interpreters, and I am uh, trying to understand all these things that this book have explained, and I'm trying to implement those things inside my code. Here things are explained in Java, in the Java language, and I am trying in C++ because I like C++ more. Currently I'm not sure about parsing algorithm, which algorithm I'm going to use.
Mm, So what I need is a scanner kit, a scanner object, and let's give it scanner. We need to pass the file string. Yep, file str. It will be of str type. I hope there is no issue, but there is some kind of issue. I need a pointer here. And then what I can do is the next step that I need to do is scan tokens. This was the function that I need. Yeah, peek next peek. I've used peek next here. I can use match of this type. If it gets a match, now I get a very strong feeling that if I am going to run my file, I'm going to have some runtime errors. Let's just see. Scan of scan tokens. Is this going to work? Is this going to work? Let's try running my file. I knew it. What is this? No such file directory. Undefined reference to scanner. What is this? I forgot which file do we need to implement. It was .h or .cpp. It was .cpp. Okay, code is compiling without any issue. The whole code is getting compiled without any issue, without any runtime issue, without any compilation issue. Now what I need to do is I need to check tokens. But the worst part is how can I print all the vector of token type? This is the type of tokens. So we have tokens. How many tokens do we have? What I can do is I can directly at least one small thing that I can do is I can ask for scan tokens. It's only going to scan. I cannot access those variables. What I can do is I can add a function. Of course I can. A small function just for debugging purpose, which will be of like void. Yeah, it will be void and dbg type. What is the time? Okay, it's already getting late. I guess I have done enough for today. Able to make those tokens, and so the first part of the series is done.
Today I was also only going to cover the the lexing part, to which is based on how to make tokens from the file that I've given as an input. And I guess I'm done with this. Okay, so I'm going to continue this in the next stream. The part for today is done. Anything left? No, I don't think anything is left. So thanks for watching this stream, guys, and thanks for liking, thanks for subscribing, and thanks a lot for everything. So let's see you guys in the next stream. Okay, bye bye. If you guys got any question to ask, just drop comment in my video, in any video. Drop me a comment. I'm going to answer your question. If you guys have any question related to any computer science or career, just anything. Okay, see you guys in the next stream. Bye bye. Tada.